Who is this? Surya Kumar Yadav. Right? This one? Chris Gayle, right? Very famous. When these sportsmen come to play cricket, do they get too much of attention? No. They will come with a state of mind that I am going to hit sixers today. ಆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಅಷ್ಟೇ. Got it? Same thing happens with you. However you are talented, if you go with a state of mind, positive mind, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So you need to make sure what is your mindset. Always be with positive mindset. What should be the mindset? Positive mindset. Okay? Now, do we need some pressure or not? Pressure ಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ? ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಬೇಡ? ಏನು ಬೇಡ? ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9:30ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಮಗ 10:30ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗ 9:30 एग्जाम को तो कब उठती है यजमान? 10:30 को उठती है. आज क्या की है कहते ना, मेरे फ्रेंड्स आप सभी दिख रहे हैं ऑनलाइन में, कहाँ की चलेगी करके किसका की स्टेटस देखा होता, एग्जाम है आजकल. क्या होता है, प्रेशर नहीं इसको तो बिल्कुल प्रेशर नहीं, ऐसा नहीं रहना. You should know this. Virat Kohli, in one of, how many of you are favorite for Virat Kohli? Fan of Virat Kohli? Very good. Lot of people. Yes, lot of people. In one of his interview, he says that I go with the same mindset if I play against Australia, England, Zimbabwe or Kenya. ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ. Same way student has to take a pressure so much that this is important in his life. That much you should know. That much serious you should have. इतना तो मालूम रहना कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बहुत अहम है. इतना तो सीरियसनेस रहना, इतना रहना. लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं रहना कि प्रेशर कुकर नहीं हो जाना. प्रेशर कुकर हो गया तो क्या होता, हीट होगा, सीटी बजा देती. Got it? So the pressure नहीं रहना. You should not have so much of pressure. Just have the seriousness of exam. Okay? Now, what are the reasons? There are a lot of reasons. First reason is inadequate or last minute preparation. Now what do I mean? Many students, even they know the exam timetable has come, until the last day they don't have the material. सब एग्जाम को तो भी आज तक भी मटेरियल लेको नहीं गिनो यजमान. कौन सा सब्जेक्ट को मालूम नहीं है, कौन सी बुक पढ़ना को मालूम नहीं है, कौन सी नोट्स रेफर करना मालूम नहीं है. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन. तब सडन जाकर टेंशन ज्यादा हो जाता. सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं रहना. अब इसका सॉल्यूशन क्या? सिंपल ऑपोजिट. गेट द मटेरियल इन द बिगिनिंग. यू हैव द टाइम टेबल, टेक द प्रिंट आउट ऑफ द टाइम टेबल, कीप इट नियर बाय यू, टेक द मटेरियल, टेक द नोट. simple as that. Now, high expectations. This is one of the reasons. High expectation, when I say, most of the parents want their students to get 99, 98 each one. Top class only they want. Parents, sometimes teachers, sometimes self pressure also is there. Yeah, you should score 99 only. That also gives stress. 99 होना चाहिए, कम आया तो नहीं छोड़ता आपको होती. That is also a stress. Yeah, as I said, sometimes teachers and parents also put a lot of stress. Feeling of competition with others. The student will be thinking, what is my friend studying? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿರುತ್ತು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು. This thinking, this peer pressure will be there among the student. They will be thinking about others. ಅವಳ ಅದೇನಾದ್ರು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಓದಿದಾಳ, ಆ ಗೈಡ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿದಾಳ, ಇನ್ನು ಓ ಪಡ್ದಲಿಕ್ಯಾ, ಎ ಪಡ್ದಲಿಕ್ಯಾ. They are thinking about others always. They don't know that they have to be capable of themselves. That's it. They should never worry about what others are doing. This is the simple philosophy what I have followed in my life. I never bother what is the competition outside. Always competition should be within yourself. You getting the point? Competition, it should be within yourself.
What are you now? Suppose you are at 50%. You should try to improve to 60%. You should only try to improve yourself. That's it. Don't worry what your friend is doing. Don't worry about that. Okay? Next, fear of failing. Many people think I am going to fail this examination. Maths I am going to fail. Science I am going to fail. Kannada I am fail. Many people have it. So this fear also gives attention. So feeling less prepared already told. Yeah? How do we overcome? Either a solution ಏನು? I'm very happy some kids are making a note. Very good. I think the uniform kids are MMDRs. Very good. I appreciate this. So they are making a note. How do we overcome? Solution ಏನು? Simple. First ಒಂದು goal setting ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ. That is the first step. Okay. Goal setting. Second step. How do I reach the goal? How do I reach the goal? Scheduling we call it, or we call it as timetable. We have to have a timetable. How much I will study, which subject I will study on which day. All these details I will show you in details also. Then proper area breaks. We will move to this also. Now, can I have 4 volunteers each? Those who have not come. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅವರು volunteers ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. We'll do an activity. Come on. 4 boys, 4 quickly. Come fast. Come fast. Four boys, 4 girls I wanted. I can see lot of girls here also. Masha. Okay. Oh my God. How many? Huh? Hey, I can see lot of boys here, man. Why don't you come forward? इतना छोटा गेम्स में आप इनिशिएटिव नहीं लेते, लेकिन पे क्या इनिशिएटिव लेती? हाँ? Okay, okay. I actually wanted 4 and 4. Anyway, you got more, no problem. That's okay. No issues. No issues. No issues. Okay. So all of you also can be a part of it. No problem. Okay. Fine. Stand in a line. Stand in a line. Face this side. Face the audience. Face the audience. Face the audience. Please stand in a line. Yes. Yes. Okay. What do you see in the screen? Can I have a mic which is on? What do you see in the screen? Quickly. Goal setting. Then इन्हें कांस्ता है क्या दिख रहा हो? एक लड़का दिख रहा. Okay. Quickly. आप लोग बोलो जल्दी दूसरे. Quickly. What do you see? क्या पानी सुखेंदे का को दिख रही? बोलो क्या दिख रहा? इतना डीप में जा रहा हो तुम्हें पानी के अंदर जा रहा हो. माइक पास करो. We have less time. Pass the mic. Yeah. नजदीक ले आओ माइक. बोलो. Take the mic nearby. Yes, quickly boys. Fast, fast, fast. Oh, I'll go to girls. Okay, please. एक बच्चा अपना ये बंदा है ना दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करे. A kid is throwing stone. पत्थर है ना उधर फेंकने की कोशिश. Okay, good. Yes, quickly. There is a boy who is throwing the rock in the water. Yeah, good. Yeah, what else you see, ma? Yes, correct. Same. Okay, very good. Perfectly you said. एक बच्चा जो है पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है. Correct. Yes, good. Very good. Very good. Destination को फेंक. Now we will do a same activity here. Same activity we'll do. Same activity यहाँ पे करना. You have to imagine you are standing there. This is a seashore. ठीक है? This is a seashore. Stand properly. Stand in one line. Yeah. This is a seashore. From here the water begins. Okay. Imagine the chairs where start now. वहाँ से पानी शुरू हो रहा. How will you throw the stone? पत्थर है आपके हाथ में. आप कैसा फेंकती? अगर आपका टारगेट है, don't worry. टीचर सिंगर को डरो ना को. This is just imaginary, right? How will you throw? कैसा फेंकती आप? करो. दिखाओ मुझे. बोलना नहीं. Show it. Come on. पत्थर देना क्या? ले लो पत्थर ले. Throw now. Okay, come on. Quickly. शर्म ना नहीं. शादी करी तुम्हें. Come on, quickly. Okay, I'll start from here. Wait. I think girls are only good. How will you start? How will you throw? आप throw करके दिखाना. यहाँ से पानी शुरू हो रहा. पानी में पड़ना पत्थर. That is your target. How will you throw? Okay, very good. One by one. How will you throw? Yeah. Okay. How will you throw? Okay. How will you throw? Quickly.
मेरे को दिखाना था तुम्हें। टेक टी इतना अच्छे ओके अब बोलो जल्दी क्विकली टेको जी हाँ डाल तुम्हें ओके फाइन ठीक है नो प्रॉब्लम दिस वाज फर्स्ट टारगेट नाउ सेकंड टारगेट फॉर यू वो समंदर के बीच में जाना पता बीच में समंदर के बीच में हम निकले लेट फैन के नीचे बैठी तो अंदर लेट के नीचे उन्होंने करके समझ लिया पत्थर सीधा वो ग्लास तोड़ने को जाना हाउ विल यू थ्रो देखो दिखाओ ना बोलो ना कोई थियरी आई वांट प्रैक्टिकल हां वेरी गुड माशाल्लाह हाउ विल यू थ्रो हां देखो यस वेरी गुड हां माशाल्लाह वेरी गुड करेक्ट फेंके दो हां या हां ओके हाउ विल यू थ्रो यस या वो स्टेप भी डालती थी इसमें माशाल्लाह नाइस मार दल्ला बोलना नहीं मैंने मारो करो सब नहीं बोलो मारो ओके गुड हाउ आर यू यस या ओके यस कम ऑन थ्रो इट फास्ट यस या ओके टारगेट को एम करो फेंक दी यू टेल मी व्हाट वाज द डिफरेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट व्हाट द डिफरेंस अच्छा बोल रही हूं तो मैं बहुत अच्छा बोल कम ऑन हां फर्स्ट गोल रखे थे हमें नहीं गोल रखे थे करीब में रखे थे गोल हाँ तो दूर का एक रखे ना और से हाँ दूर हाँ सामने हाँ ओके गुड या एनीबॉडी एल्स क्विकली बोलो हाउ तुमने बोलने का जल्दी एक ले क्विकली यस बॉयज यू व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट हमारा टारगेट छोड़ा था वेरी गुड पॉइंट लिसन टू हिम वेरी गुड पॉइंट इज टेलिंग यस बेटा परफेक्ट टारगेट बड़ा हुआ तो आप में डिफरेंस क्या हुआ पहले आपका टारगेट छोटा था तो आपका एफर्ट कैसा था मेहनत क्या थी ज्यादा थी कि कम थी कोशिश कम थी जब एफर्ट गोल टारगेट ज्यादा हुआ तब क्या थी कोशिश ज्यादा हुई करेक्ट अब ये बताओ आप पत्थर पानी में पड़ना मतलब में रिजल्ट जब आप दूर फेंकने की कोशिश करती तब पानी में पड़ने का चांस ज्यादा है कि नजदीक ऐसा हल्लू फेंकती ना तब ज्यादा पड़ने का चांस एफर्ट ज्यादा था ना तब डू यू एग्री करेक्ट सो this I'll relate this to academics for you for example what happens is in our life this is a human psychology if I'm aiming higher my mind will tell me come on boss you're aiming higher you have to put lot of effort मेहनत ज्यादा करना है आपका टारगेट बहुत बड़ा है मेहनत ज्यादा करोगे तो बोलता टारगेट कौन बोलती है माइंड अपना will start putting lot of effort जब टारगेट इच कम है तो माइंड क्या बोलता टेंशन नहीं लो बिरयानी खाना को सो जाओ टारगेट इच नहीं है तुम्हारा क्या भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है तब क्या करते हैं मैं खा ले आराम से सो जा करेक्ट बट लाइफ में सक्सेस अचीव करना का तो टारगेट क्या रहना बड़ा रहना डू यू एग्री in academics also same thing happens if you set a target of say 95 there is a chance when you put more effort you might reach till 90 or 85 at least when you put the target as 95 if the target itself is less टारगेटिंग बच्चा 35 रख लिया तो क्या हो जाता था कम उससे कम कर दो क्या 35 से कम कर दो फेल हो जाती ना समझे बात क्यों फेल होती है तो बोलते हैं बच्चे बिकॉज they never set good target they have never set a target itself that's why they fail if you set a target definitely you are going to achieve आप ये अचीव करती टारगेट हाई रखती जोर से बोलती है एक बार माइक में सभी मिलकर व्हाट विल बी योर टारगेट हाई इंशाल्लाह व्हाट विल बी योर टारगेट मां हाई इंशाल्लाह ओके ग्रेट थैंक यू सो मच प्लीज बी सीटेड गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वेरी गुड